Good afternoon, all dear students. Last time we had learned sources of heat. Okay, today I am going to teach you what is the relative sensation. See, there is an activity. There are three jars. Take three similar vessels. Let us call them A, B, and C. Okay, see figure 14.2. Figure A with hot water, figure B with cold water, and put some other from A and B and C. ए एंड बी इन सी. ए बी दोनों मिक्स करके सी में डालना है. डिप योर हैंड्स डिप योर राइट हैंड्स इन ए एंड लेफ्ट हैंड्स इन बी एंड कीप देम इमर्स फॉर 2 to 3 minutes. आपको ऐसे डुबो के ही रखना है 2 to 3 minutes के लिए. नाउ डिप बोथ द हैंड्स इन सी. दोनों हाथ फिर आपको क्या करना है, सी में डुबाना है. सी व्हाट डू यू फील. तो आपको क्या फील होगा. तो even through both the hands, even thought both the hands are dipped in water in the same vessel, that is water at the same temperature, your right hand will find the water to be cold while the left hand will find it to be hot. What is the reason for this? Think about it. You must have understood from the above activity that we cannot determine the temperature of an object accurately by simply touching it. Also, you may hurt yourself by touching very hot or cold object. So we feel the need of some device for measuring temperature. That is, thermometer is a device for measuring temperature. You have read about thermometer in the previous class. In this lesson you are going to learn about the construction of thermometer. Okay, there is a question, students. What are potential and kinetic energy? Okay, potential और kinetic energy क्या होता है? The answer of this question is the energy stored in the body because of its specific state or position is called potential energy. जो specific state से और पोजीशन की वजह से जो बॉडी में एनर्जी स्टोर होता है उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी. द एनर्जी पोसेस बाय बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी. तो जो एनर्जी मतलब वर्क करने के लिए यूज़ करते हैं उनको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. द एनर्जी पोसेस बाय द बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन की वजह से जो एनर्जी यूज़ होता है उसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. लेट्स सी इन डिटेल हीट एंड टेम्परेचर. व्हाट इज हीट एंड टेम्परेचर? सो स्टूडेंट्स, what is the difference between heat and temperature? We know that the substance is made up of atom. हमें पता है एटम से क्या बनता है, सब्सटेंस बनता है. द एटम इन ए सब्सटेंस आर ऑलवेज इन मोशन. जो भी एटम होता है सब्सटेंस में हमेशा वो मोशन में होता है. द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम इन ए सब्सटेंस इज मेजर ऑफ द हीट कंटेंट इन दैट सब्सटेंस. तो ये जो काइनेटिक एनर्जी होता है एटम का, वो जो सब्सटेंस होता है, सब्सटेंस में जो हीट होता है वो हीट की वजह से वो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एटम में होती है. वाइल द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इज रिलेटेड टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम. तो जो टेम्परेचर होता है सब्सटेंस का वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम होता है, इससे रिलेटेड होता है. इफ़ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम इज इन टू ऑब्जेक्ट इज इक्वल देन देयर टेम्परेचर विल ऑल्सो बी इक्वल. अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम जो रहेगा टू ऑब्जेक्ट में वो किससे इक्वल रहेगा, टेम्परेचर से इक्वल रहेगा. देखो इधर फिगर दिया है. यू हैव टू ऑब्जर्व मोशन ऑफ एटम इन गैस एंड सॉलिड. ठीक है. इसमें दिया है शो द वेलोसिटी ऑफ एटम इन ए गैस एट हाई एंड लो टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली. ठीक है. The direction and the length of the arrow attached to the atom show the direction and magnitude of the velocity of the atom. The velocity of atom in the gas at a higher temperature is larger than the velocity of atom in gas at lower temperature. अगर गैस हाई रहेगा तो वेलोसिटी भी हायर रहेगा, अगर लो रहेगा तो
एटम का जो वेलोसिटी रहेगा तो वो भी क्या रहेगा, लोअर टेम्परेचर में लो ही रहेगा। ठीक है, अभी देखो नाउ the velocity of atom in a solid object are shown by arrow in figure 14.3c. The atom in a solid object are tied to one another because of force acting between them, so they cannot be displaced from their place. Because of heat they oscillate around their fixed position. Higher the temperature of solid, faster is their velocity of oscillation. अगर हायर टेम्परेचर रहेगा तो जो वेलोसिटी रहेगा ऑब्जेक्ट का वो फास्ट रहेगा। ठीक है, और अगर टेम्परेचर कम रहता है तो ऑसिलेशन भी क्या रहेगा, कम ही रहेगा। ठीक है, सपोज ए एंड बी आर टू ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम द सेम सब्सटेंस। अगर ए और बी दो ऑब्जेक्ट है और सेम सब्सटेंस से बने हैं तो द मास ऑफ ए इज ट्वाइस द मास ऑफ बी, विच मीन्स दैट द नंबर ऑफ एटम इन ए इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एटम बी। अगर ए एटम का मास बी से ट्वाइस है, ज़्यादा है, दुगना है, तो ए का जो ए में कितने, ए में जो एटम रहेंगे वो ज़्यादा रहेंगे एज कम्पेयर टू बी। Even if the temperature of A and B are equal, that is the average kinetic energy of atom in A is same as that in B. लेकिन ये दोनों को हीट कैसे लगने वाला है, सेम लगने वाला है, बिकॉज जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है एटम में ए और बी में तो सेम है। इसकी वजह से द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम इन ए इज ट्वाइस दैन बी, thus the heat content of A is twice than of B, even through they both have the same temperature। ठीक है, तो जो हीट रहेगा ए में वो भी दुगना रहेगा बी से। अगर दोनों को टेम्परेचर भी सेम लग रहा है लेकिन हीट ए में ज़्यादा रहेंगे, बिकॉज उसमें एटम भी कैसे रहेंगे, ज़्यादा रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये हीट और टेम्परेचर से रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, फिर ये हम ट्राई दिस का एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, vibrational motion in solid. When we look at the solid, the atoms are very close to each other. They cannot move freely due to the presence of potential energy. Potential energy is the form of energy which helps to an atom to move from one place to another place. But in the case of solid, when we zoom at one atom, it is surrounded by different atoms. When it is surrounded by different atoms, then it cannot move freely. So this atom move to and fro. This to and fro motion is known as vibratory motion or vibrational motion. That is all about vibrational motion in solid. Motion of particles in liquid. We know that intermolecular forces in liquid is intermediate as compared to solid and gases. Intermolecular forces in liquid is stronger as compared to gases but weaker as compared to solid. The molecule of liquid move randomly. They can move from one place to another place in any direction. That's why the liquid is mobile in nature. When we pour some water or some other liquid on our floor, then it moves from higher surface to lower surface due to presence of slow intermolecular forces. You can easily see in this animated video the particles of liquid move randomly due to the presence of kinetic energy in the molecules. The kinetic energy helps the molecule or atoms in the liquid to move from one place to another place. That is all about motion of particles in liquid. About motion of particles in gaseous state. When we talk about the motion of particle in gaseous state, first of all, we know that
the intermolecular forces in gases is very, very weak as compared to liquid and solid. And the volume of gases is very bigger as compared to liquid and solid. The molecules or atoms of gases move randomly from one place to another place. When we take some gas in a container, the gas molecule exert pressure by colliding with the wall of the container. These molecules also collide with one another. When we talk about the energy of the molecule or atoms in gaseous state, the energy of particles in gaseous state is very, very high as compared to liquid and solid state. That's why they move faster as compared to liquid and solid. The motion of the gaseous particle is random in nature. They move randomly from one place to another place. That is all about the motion of particles in gaseous state. We will meet another animated video. This was our today's lecture, students. I hope you understood. Thank you. Bye bye.